So today we will begin a new chapter. Yesterday I could not send you the scan of the study material. Today I will do it. Okay. So students, when do we have the fourth quiz? On 28th, sir. Okay, right. So today I will send you the reading material up to the transport layer. Okay. So we will begin the new chapter, that is sensor localization. If you have any questions, students, in the last class, please don't hesitate to ask. Okay. Today is 20th or 20th, right? So sensor localization. So what do you understand by localization? What is localization? Archana, Yes, sir. what is localization? So by sensor localization, mean establishing among the sensor node, establishing the locations of the particular nodes, like finding out where the nodes are located in the network. Okay. So basically, the location information. Yes, sir. Location information of sensor nodes, right? So where else you use this localization concept? Which are the other places you use localization? Students? Sir, monitoring animals in a wildlife sanctuary or somewhere, track the locations of the animals. और कोई simple example? सर हम ऊबर यूज करते हैं तो हम अपने पाथ को ट्रैक करने के लिए. ओके. सबसे सिंपल एक एग्जांपल है, तो आप जो फोटो लेते हो, फोटो में आपका लोकेशन भी रहता है ना. कहीं का इमेज लेते हो तो इमेज के साथ आप लोकेशन को भी ये कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, है कि नहीं? So the metadata about the image, about the picture. So location information can be one of the metadata associated with the photo or video, right or not? Yes, sir. Yes, sir. So आपके मोबाइल फोन में ये करते हो, ठीक है? हाँ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. So the fundamental question arises here is that how does your mobile phone understands where it is located? So GPS sensor. Yes, GPS sensor. So every mobile has, whichever has the advanced mobile phone, smartphone has a GPS. Your location enable जो आप on करते हो, ठीक है? लोकेशन ऑन जब करते हो, आप देखे हो लोकेशन सेटिंग्स? Yes, sir. Yes, sir. तो लगभग सभी लोग जो है लोकेशन को ऑन ही रखते हैं, पता नहीं उनको ऑफ भी कर सकते हैं, ज्यादातर लोग, ठीक है? सो व्हाई देयर इज ए ऑन एंड ऑफ बटन? So to protect privacy. That is one angle. Okay, fine. What else? Battery saving. Yes, exactly. So energy is the primary issue, primary reason कि हम लोग उसको ऑफ रखते हैं, ठीक है? प्राइवेसी एक चीज है, बट एनर्जी इज द की ऑप्शन. तो आप देखोगे कि उसको अगर ऑफ रखोगे तो आपका बैटरी 2 दिन तक चलेगा, तीसरे दिन चार्ज मांगेगा. आई एम जस्ट सेइंग, assuming that you don't use, your screen time is less, okay, screen time is less,
तो 2 दिन के बाद आपको तीसरे दिन आपको चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अब लोकेशन कंटिन्यूअसली अगर ऑन रखोगे तो हर दिन आपको चार्ज करना पड़ेगा। दिस इज अ सिंपल एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन, राइट? तो what makes this drain of energy faster? Sir, continuously sensing the data. What data? The location data from the GPS satellite and all. Yes, so it is the synchronization between the GPS and the device at hand, right? It is the synchronization activity between the satellite and the device at hand that drains. So your radio is busy almost all the time. That's why it drains the energy. It eats up lot of energy. ठीक है, तो इसीलिए हम जब ऑफ कर देते हैं लोकेशन तो सिंक्रोनाइजेशन does not remain a continuous activity anymore, so there is energy conserved. तो क्या सेंसर नोड में सेंसर जब हम डिप्लॉय करते हैं, मोस्टली सेंसर्स आर डिप्लॉयड इन सेंसर्स का जो यूज है दैट इज बेसिकली टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम locations which are not easily accessible, right? So when we want data from locations which are not easily accessible, that means जब हम deploy करेंगे तभी भी वो जगह लोग easily accessible नहीं है। So deployment उसका ऐसे होता है कि random ये में होता है। मान लो कि किसी एक हाइट से हेलीकॉप्टर से जाकर ड्रॉप कर दिया या किसी जगह पे ऐसे ही हमने मुट्ठी भर के फेंक दिया। जस्ट आई एम सेइंग लाइक दैट। सो मोस्टली द डिप्लॉयमेंट इज नॉट डिटरमिनिस्टिक मोस्टली, बट जब हम डिप्लॉयमेंट डिटरमिनिस्टिक होगा तब हमें पता है कि कहाँ पे सेंसर नोड्स को हमें डिप्लॉय करना है। सो इन ए वे वी विल बी अवेयर अबाउट द लोकेशन, but how the sensor nodes will be aware about their location? Either they have to be hard programmed कि हम उसमें डिप्लॉयमेंट समय पे ही हम रख लें, प्रोग्राम कर ले उसको कि हाँ तुम्हारा लोकेशन ये है और उसको वहां पे डिप्लॉय कर ले। So the location doesn't change over a period of time. Whatever we have hard programmed, that will stay. But what if the nodes are deployed randomly? उनको अपना कौन नोड कहां पे जाकर डिप्लॉय होगा ये उनको पहले से पता नहीं है। सो द सिचुएशन इज नॉन डिटरमिनिस्टिक। इन दैट सिनेरियो द नोड्स नीड टू नो वेयर दे आर लोकेटेड, राइट? बिकॉज द इंफॉर्मेशन दे सेंड टू द बेस स्टेशन और सिंक मस्ट हैव द मेटाडेटा ऑफ द लोकेशन with it, right? So that is the reason why location information of these sensor nodes are important. Now the second question comes is that how these sensor nodes will get to know that where they are located, because it is not hard programmed, they were deployed randomly, so they themselves need to discover where they are located, right? So this is what is the situation where localization of sensor nodes is required. So how do the sensor nodes find their location by themselves, right? How do the sensor nodes find their location by themselves? That's a question. So the first answer that goes to this question is that through the use of GPS. So every node has a GPS module, and the GPS syncs with the satellite, and then the location is determined, and that location information is subsequently shared with neighboring nodes and also with the base station. That is how the neighboring nodes will have an idea about where their neighbors are located, and also the base station will have the idea about where the sensor nodes are located. But
we understood, we just discussed in the beginning that GPS consumes lot of energy. First thing. Second thing is that it is expensive. Third thing is that your sensor devices itself are very small, and usually they operate in 2 AA power batteries, 3 volt 2 AA power batteries, right? So how long will it go? And there is no scope for recharging the batteries of the sensor nodes frequently, because they are not easily accessible, right? So these difficulties associated with GPS makes GPS a non-ideal candidate for low sensor node localization. Although GPS is an approach, but GPS I think there the GPS doesn't work. Fine. So there is a need for understanding the other approaches of finding sensors location. Students, Yes, sir. I don't know how far you have attended my talk. Sir, Actually, alternate. in between it got disconnected and I was talking. And when I thought that I'll ask you what did you understand, I found that network is no more available. I don't know, I mean, how far you have listened. Sir, till you told us that the GPS is not a feasible option and we have to look for alternate solutions. Okay, okay, that means everything went fine. Okay, okay. So I hope there is no, did you hear about the non-line of sight? Line of sight and non-line of sight? No, sir. Okay, No, okay, sir. okay. So the second reason is, if you go a little bit technically into GPS. Sir, please repeat the GPS part also. See, GPS is basically, it's expensive, right? GPS is expensive. So screen sharing is going or not? No, sir. Okay. Okay, just a minute. I think now it's okay. Yes, sir. Okay. So GPS is expensive. GPS is expensive. Second thing is that consumes more power, right? And so since this is, I mean, the devices are not easily accessible, frequent recharging or frequent change in batteries is not possible. So we need a mechanism which
runs for a longer period without change in battery. Okay, and the thing is that GPS works fine in non-line of sight scenario. Sorry, let's say that clear line of sight scenario, right? So in non-clear line of sight case, GPS will not work, right? And also water, it will not work well. So GPS is not a viable option for these tiny sensor nodes. So conclusion is GPS approach of localization is not a viable option. Is not a viable option for tiny sensor nodes, right? So is this clear now? Okay. So the popular method, there are three methods used for localization. One is that RSSI, that stands for Received Signal Strength Indicator, and the second one is Time Difference of Arrival, TDOA, and the third one is triangulation. So these are the three methods popularly used for sensor node localization. Okay, so the first method, RSSI, depends on the received signal strength. Okay, so the distance is measured. So the first one, the distance among sensor nodes is measured using the received signal strength, right? So is this clear? It allows the distance measurement among sensor nodes using received signal strength. So how do you visualize this? So a node transmits. So this I'll say the transmitter, and this is a receiver. Okay, this is a receiver. So when it transmits, okay, when it transmits with some power, so transmission power it has, okay, and it will receive with some power. Okay, so let's say it transmits the signal at power p lambda. Okay, and the antenna gain of the transmitter is let's suppose GT. This GT is the antenna gain of the transmitting antenna, and P lambda is the power of the transmitting signal, and on the receiver side, G receiver is the antenna gain of the receiver. Okay, and lambda is the let's say the system wavelength. Okay, lambda is the system wavelength. So lambda is the system wavelength. Lambda is the system wavelength, and L, because this is a medium. Okay, this is a medium, so this medium will have some loss factor. So L is the loss. L is the loss. Okay, L is the loss. So so the power of the signal received by the receiver will be P
PR with the distance d. Let me say that they are separated with the distance d, separated with the distance d. Okay, so d separated with the distance d. So we'll say that the power of the signal received by the PR stands for power of the signal received by the receiver, okay, which is situated at a distance d from the transmitter. So PR of d is equal to P lambda, okay, P lambda GT GR lambda square divided by 4 pi square d power n L, right? So the receipt power model is given as PR, which is separated from the transmitter at a distance of d, is equal to P lambda. P lambda is the transmitter power, GT is the transmitter gain, antenna gain, GR is the receiver antenna gain, and lambda is the system wavelength, and divided by 4 pi square dn L. Why it is pi square? Because we are considering this is a omnidirectional antenna. Okay, we are considering this is omnidirectional antenna, which means its effect is circular. Okay, so if it is directional antenna, then it will be different. Okay, so PR is this much, right? So what we see here, what this equation says. So this equation clearly says that if I draw a graph between the distance d and the what is that PR, okay, PR, right? If I try to plot this, okay, when d is varied, so what will be the curve? It's a downward exponential. Right? Yes. So it is decaying exponent, right? It's decaying exponent for different values of p. 1 minute. Hello. Good afternoon. After little time, okay, I'm in class. Yeah. Okay, so it is exponentially decaying. Fine. So what does it mean? It means that as we move away from the transmitter, the power, the receipt power decreases, the strength decreases drastically, right? So what is the problem with RSSI? So if I'm trying to measure D, receive D, because this is unknown. I have all these parameters. The receiver, I know. Suppose the receiver is trying to understand its location, then it uses I know P lambda, I know GT, I know GR, lambda, L, everything I know. Only unknown is D. Right or not? So what influences D, calculation of D? So the power n. PR influences. Sorry, I mean, I think we went wrong somewhere in the conclusion. What influences? The question was, what influences the estimation of location? Yes, somebody said the correct answer. The received power, right? This is the PR. Yes, PR. PR influences the localization
Right or not, students? What about others? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes. And PR depends on what? PR depends on The distance and the n. distance. Yes, distance and the environment in which the nodes are located. Yes, sir. Because the loss component of the medium in which it is signal is traveling. So RSSI way of finding the location of the sensor nodes do not work well. Is it clear? Sir, Yes. it does not work because we cannot exactly determine the value of n, right? Sir? What is it? Can you please elaborate? So the RSSI method does not work because n is changeable with environment and we cannot determine its exact value. Yes, exactly. Right. Okay, sir. So this approach of finding local location is not perfect. It will give, but the location information may not be correct. It is energy efficient, better than GPS mechanism, but the location accuracy is not cannot be guaranteed. That's the conclusion. Fine. So to deal with this issue, the second approach, that is time difference of arrival, that is TDOA, right? So what is TDOA mechanism? It basically finds out the distance based on um, time of arrival of a synchronization message and uh, and a chirping signal. It's basically a sound signal, right? Sound signal. So that lag tells us that how far the two nodes are. Let us see this. Now let us suppose there is a node A, okay, node A and node B, okay, node A and node B, and suppose this is a timeline, time axis. This is the time axis, and I said that it is the difference between time difference between the radio signal received or the synchronization signal received and the time at which the voice sent by A, I mean some sound sent by A is received by B. It is that time difference. So what we say is that A sends a radio signal. A sends a radio signal. Okay, A sends a radio signal, and if B is in its communication region of A, in the communication region of A, then B will receive that, and then after waiting for some time, this we call as T radio, which means that the time at which the radio, the synchronization signal was sent by A to all the nodes that fall under its communication range. Okay, so T radio is sent, and after waiting for a delay period, maybe, may not be, but let's say that it waits for a delay, okay, delay period, and after that delay period, it sends a sound. I mean, basically it has a speaker. This is ultrasound. Okay, it uses two modalities of communication. One is ultrasound and the other one is your radio. So I forgot to write, so just two modalities of communication. One is the ultrasound,
and the other one is the radio. Okay, so this radio is for synchronization or making the what is that, the mic on. Okay, so at this time it sends a T radio. Okay, B receives it. Okay, and it turns on its microphone, and after a delay of t time units, it sends a noise. And noise means it's a sound. It's a sound. Okay, it turns on its speaker and it sends a signal. Okay, so we'll say that this is sound, and the time at which it is received by the receiver is T sound. Okay, right? So what will be this? What will be this? So this is the delay, right? This is the delay. This is the delay, right? Is it, am I going right, or there is something wrong? We have to subtract the time difference of sending the two signals from A also, no? We have to subtract that from the question mark. From? नहीं सर, ए से सर पहला सिग्नल जब सेंड हुआ और जो सेकंड सिग्नल सेंड हुआ तो वो टी डिले ऑफ सेंडिंग है, उसको Right. माइनस करेंगे ना सर, डिले ऑफ रिसीविंग से हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको फाइनल डिले मिल जाए. हाँ, तो ये वाला जो हुआ, ये जो हुआ, ये तुम्हारा टी डिले हुआ. ठीक है, ये वाला पोर्शन टी डिले हुआ. और ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये प्रोपोगेशन डिले. ठीक है, तो इन दोनों का सम जो होगा ये होगा. जी सर. राइट, तो ये क्या होगा? व्हाट इज इट्स वैल्यू? ये भी तुम्हारा टाइम है. यस सर. हाँ, ये टाइम क्या होगा? सर सिग्नल को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा वो वाला टाइम इसमें आएगा. यस, तो कैसे इसको लिखेंगे? तो वो कैसे इसको लिखेंगे? डिस्टेंस ओवर, डिस्टेंस ओवर स्पीड. यस, स्पीड होगा. राइट, तो स्पीड में क्या होगा यहाँ पे? तो साउंड का स्पीड सर, स्पीड ऑफ साउंड 300 मीटर्स पर सेकंड. थोड़ा सा और सोचो. क्या होगा? Sir, we are sending a sound signal, so Yes, speed of sound is sound ही लेंगे सर. अल्ट्रासाउंड. ठीक है, सही चल रहे हो. बताओ, सही जा रहे हो. That's fine. मैंने तुम्हारा जो सोचना है वो पूरा सही है. ये साउंड ही होगा, स्पीड ऑफ साउंड ही होगा. लेकिन व्हाट इज दैट? इज विल इट बी सिंगल क्वांटिटी और मल्टीपल क्वांटिटी, डिफरेंस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा डिनोमिनेटर में? सर डिनोमिनेटर में आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा ना सर, टाइम के लिए. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो हो गया. डिस्टेंस तो आपने बोल दिया. यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में बोल रहा हूँ. ओके. सर नहीं समझ में आ रहा सर. तो यहाँ पे कौन कौन सा दो सिग्नल जा रहा है ए से बी के लिए? So one is a radio signal and second is ultrasound. अल्ट्रासाउंड. परफेक्ट. तो एक जाता है रेडियो सिग्नल और दूसरा हो गया अल्ट्रासाउंड. ठीक है, तो इसका स्पीड होगा और इसका स्पीड होगा. यस सर.
Yes sir. अरे sir हाँ. हाँ, Okay. राइट. Yes sir. Yes sir. क्योंकि एक सिग्नल रेडियो है, एक सिग्नल अल्ट्रासाउंड है, हाँ, so we have to तो दोनों consider का both. स्पीड अलग है, दोनों का स्पीड अलग है. तो यहाँ पे क्या आएगा, एस रेडियो माइनस एस साउंड. तो ले दे के ये स्पीड ही हो गया है कि नहीं. सो डिस्टेंस ओवर स्पीड दैट गिव्स मी दिस टाइम, Yes sir. एंड दिस टाइम प्लस दिस टी डिले, ये दोनों मिला के मेरा टोटल टाइम बनता है कि नहीं. सो इसको मैं कैसे Yes, लिखूं, इसको मैं कैसे लिखूं. तो d इज इक्वल टू d ओवर t है. ये t है तुम्हारा, ये टाइम है कि नहीं, Yes, sir. ये टाइम है. तो इसको मैं कैसे लिखूं, d ओवर ये क्या हुआ तुम्हारा, एस रेडियो माइनस एस S साउंड. ultra. ये जो अल्ट्रासाउंड का और ये रेडियो का हो गया. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू T delay plus हाँ T sound minus T radio minus T delay. क्या सही है ये. T sound minus T radio. Yes sir. हो गया. तो Yes. अगर ये मुझे पता है, ये इक्वेशन पता है, तो मैं डी कैलकुलेट कर सकता हूं. सो दिस विल बी एस रेडियो माइनस एस साउंड मल्टीप्लाइड बाय, हो गया. Yes, sir. Yes sir. सो दिस अप्रोच TDOA जो है, टाइम डिफरेंस ऑफ अराइवल, टाइम डिफरेंस ऑफ अराइवल ऑफ व्हाट, रेडियो सिग्नल एंड द साउंड सिग्नल, इसके माध्यम से डिस्टेंस कैलकुलेट करता है. ठीक है. जी sir. राइट. सो क्लियर है. स्टूडेंट्स बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, बाकी लोग मीटिंग में हो कि छोड़ के चले गए हो भाई. उमंग, Sir, I didn't understand why is it T sound minus T radio minus T delay. then why didn't you ask? I am asking again and again. Sir, Huh? I was trying to understand. देखो इट्स नॉट बिग मैथमेटिक्स, ये बहुत सिंपल सा चीज. इट्स अ टाइम डिफरेंस ऑफ अराइवल, इसी में ही सब कुछ छुपा हुआ है. टाइम डिफरेंस ऑफ अराइवल मतलब क्या है, क्या क्या चीज अराइव हो रहा है हमारा बी के पास. एक होता है रेडियो सिग्नल, दूसरा हो गया साउंड सिग्नल, बस यही है. Yes, sir. इन दोनों का अराइवल का डिफरेंस के आधार पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस. तो हमें टाइम पता है, दोनों का अराइवल का सब डिफरेंस हमें पता चल गया, टाइम पता चल गया, जिसको हम डिले कह रहे हैं. और डिले क्या है, टी डिले प्लस और टी रेडियो एंड टी साउंड. Yes, sir. ठीक है. बस आपको स्पीड पता है, तो स्पीड और टाइम करेंगे क्या, स्पीड का यूनिट क्या है, पर सेकंड हो गया, समथिंग पर सेकंड, एंड टी का सेकंड हो गया, तो डिस्टेंस बन गया, खत्म काम. सिंपल फिजिक्स है. फिजिक्स में जो है वही चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. बस इसमें खाली देखना है कि दो अलग अलग सिग्नल से, एक रेडियो सिग्नल दूसरा अल्ट्रासाउंड सिग्नल है, दोनों का जो अराइवल टाइम है उनका डिफरेंस निकाल के हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं. दैट्स इट. हर्षित, Yes, sir. Sir, did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. प्रज्ञा, Yes, sir. मोहना, Yes, sir. ओके फाइन. ठीक है. तो इसी आधार पे मैं
जो तीसरा जो है एंगल ऑफ अराइवल वाला, वो आप लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। आगे तो तीसरा वाला जो है एंगल ऑफ अराइवल, जो ट्रायंगुलेशन इज वन टाइप ऑफ एंगल ऑफ अराइवल, फंडामेंटल्स पे काम करता है, ठीक है। तो वो चीज आ जाएगा, ट्रायंगुलेशन हो गया, ट्राइलेटरेशन हो गया, ये सारे। तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूँ यहाँ पे, इसको हम कहेंगे कि एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ अराइवल, ठीक है। सर एक डाउट था सर कि जो हम लोग जीपीएस से जो लोकेशन निकालते हैं दैट इज अ ग्लोबल एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स होते राइट राइट, हैं, इनसे रिलेटिव आएगा सर सारे यस मेथड्स। यस यस, रिलेटिव आएगा। यहाँ पे क्या है कि जीपीए ग्लोबल, ये हमें जरूरत है ही नहीं। ओके पहले बात तो ग्लोबल हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास अगर कोई और साधन नहीं होगा तो हमें जीपीएस ही यूज करना पड़ेगा। उस केस में अगर हम जीपीएस यूज करते हैं तो वो सही नहीं है, ये कह रहे हैं, ओके सर। ठीक, राइट। तो एंगल ऑफ अराइवल वाला आप खुद पढ़ लेना, बहुत डिटेल जाने का जरूरत नहीं है, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल इन्वॉल्व इन दैट, कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है और कैसे काम करता है, बस आप इतना तक ही रखो। देन व्हेन वी स्टडी सम ऑफ द प्रोटोकॉल्स, उस समय हम देखेंगे कि वो प्रोटोकॉल में किस तरह इसको यूज किया है, ठीक। ऑलराइट, Yes, sir. जी सर। राइट। और कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। ये सारे फंडामेंटल्स लोकलाइजेशन के ऊपर हो गया। एक पूरा मॉड्यूल हमारा बचा हुआ है, तीसरा मॉड्यूल, हम सोच रहे हैं कि उसको ना पढ़े, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है, बहुत हैवी हो जाएगा। सो हम ये कहेंगे कि हम सेंसर लोकलाइजेशन में ही थोड़ा सा और एक आध प्रोटोकॉल पढ़ के इसको बंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल है कौन सा सर? नेक्स्ट मॉड्यूल मेरे ख्याल से Sir, content delivery network. हाँ, कंटेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, बट अभी टाइम नहीं है। सर उसका बेसिक्स कुछ हो सकता हो तो? हाँ बेसिक्स एक आध क्लास हम पढ़ लेंगे, ठीक है, कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता क्या है, उसमें प्राइम इश्यूज क्या क्या है, क्या थोड़ा सा ऊपर से देख लेंगे, सो दैट इट डजंट रिमेन अनटच्ड, ठीक। जी सर। जी सर। हाँ, एनी जीपीपीसी मुझे ही मिला है, हाँ मुझे ही मिला है, लेकिन इतना सब्जेक्ट में ले नहीं सकता, तो आई कन्वेट दिस टू डायरेक्टर। आई मीन व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू? अब पता नहीं, मैं इतना थोड़ी पढ़ा सकता हूँ कि यही खाली पढ़ाता रहूं। I will talk to director, okay? I will talk to director and then let him decide. Right, हाँ, ठीक। हाँ नहीं, मैं करेक्शन भी नहीं किया हूँ, so I was a little busy, so I could not do. I will do that. ठीक, right, okay. सर नेक्स्ट जो हमारा सर क्विज है उसका सर कोर्स ये सब जो अभी यहाँ नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर रहेगा केवल, ओनली ट्रांसपोर्ट लेयर, ओके सर। ठीक है, राइट।